disease, Cushing's disease, which is ACTH producing adenoma disease. Okay, so etiology and prevalence. So pituitary corticotrope adenomas account for 70% of patients with endogenous causes of Cushing syndrome. So basically most common cause of Cushing syndrome is Cushing's disease, which is endogenous pituitary corticotrope adenomas. However, it should be emphasized that iatrogenic hypercortisolism is the most common cause of Cushingoid features. So most common endogenous cause will be this pituitary corticotrope adenoma, and overall most common cause of Cushing syndrome will be iatrogenic. Ectopic tumor ACTH production, cortisol producing adrenal adenomas, adrenal carcinomas and adrenal hyperplasia account for other causes, and rarely ectopic CRH production is encountered. Right? Ectopic tumor producing ACTH, cortisol producing adrenal adenoma, carcinoma and hyperplasia, and ectopic tumor producing CRH. Now ACTH producing, of all these, ACTH producing adenomas account for 10 to 15% of all the pituitary tumors. Because the clinical features of Cushing syndrome often lead to early diagnosis, most ACTH producing tumors are relatively small microadenomas. However, macroadenomas are also seen, and some ACTH expressing adenomas are clinically silent. Cushing's disease is 5 times more common in women than men. So mark women. These pituitary adenomas exhibit unrestrained ACTH secretion with resultant hypercortisolemia. However, they retain partial suppressibility. So they retain the partial suppressibility in presence of high dose of administered glucocorticoids, providing the basis for dynamic testing. So presentation and diagnosis. So let us do the table first. Clinical features of Cushing syndrome in all ages. Obesity or weight gain more than 115% of the total ideal body weight. This is the most common, obesity. Then there will be thin skin, moon face, hypertension, purple skin, striae, hirsutism, menstrual disorders, usually amenorrhea, plethora, abnormal glucose tolerance, impotence, proximal muscle weakness, truncal obesity, acne, bruising, mental changes, osteoporosis, yes, edema of lower extremities, hyperpigmentation, hypokalemic alkalosis and DM. Let's go through the table once again. Okay, so coming to the paragraph, the diagnosis of Cushing syndrome presents two great challenges: to distinguish patients with pathological Cushing excess from those with physiological and other disturbances, and to determine the etiology. Striking it out. So the typical features of cortisol excess include thin skin, central obesity, hypertension, plethoric moon faces, purple striae, easy bruisability, glucose intolerance or diabetes mellitus, gonadal dysfunction, osteoporosis, proximal muscle weakness, signs of hyperandrogenism, that is acne and hirsutism. Psychological disturbances include, just underlining, like depression, mania and psychosis. This was not mentioned over there. Okay, so hematopoietic features of hypercortisolism include leukocytosis. I am marking this out. अभी तक का ऊपर का मैंने सब स्ट्राइक आउट कर दिया. Hematopoietic features is leukocytosis, lymphopenia and eosinopenia. Mark this. WBC count high, lymphocytes less and eosinophils less. Immune suppression causes delayed hypersensitivity and infection propensity. These protean yet commonly encountered manifestation of hypercortisolism make it challenging to decide when the patient mandates formal lab. ठीक है, just cut कर रही हूँ ये सब. Next page. So causes of hypercholesterol includes characteristic central distribution of fat, thin skin with striae with bruising and proximal muscle weakness in children. So the first line is saying pathological cause of hypercholesterolism are more likely if there is central distribution of fat, thin skin and striae with bruising and proximal muscle weakness. ये रहेगा सबसे पहले prominent features to think of a pathological cause. In children and young female अगर early osteoporosis है तो वो भी think of pathological cause. Primary cause of death is cardiovascular disease, but life-threatening infections and risk of suicide are also increased.
Okay, rapid development of features of hypercortisolism is associated, अगर rapid development हुआ तो skin hyperpigmentation and severe myopathy suggestive of ectopic tumor source of ACTH. Okay, रैपिड डेवलपमेंट एक्टोपिक, अगर एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो सबसे पहले उसमें स्किन हाइपर पिगमेंटेशन होएगा एंड सीवियर मायोपैथी होएगा. ओके, स्किन हाइपरपिगमेंटेशन एंड सिवियर मायोपैथी अगर पहले प्रोमिनेंट आता है तो थिंक ऑफ एन एक्टोपिक ट्यूमर ऑफ प्रोड्यूसिंग ACTH. हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस एंड एडिमा इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड. ठीक है, तो नीचे वाले जो टेबल के फीचर्स थे वो एक्टोपिक ACTH वाले. हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस, ग्लूकोज आर ऑल्सो प्रोनाउंस्ड. ठीक है, सीरम पोटेशियम लेवल्स कम रहेगा in ectopic ACTH production, but they are seen in less than 10% of patients in Cushing pituitary dependent Cushing syndrome. Okay, lab investigation. So first let us check the table below, that is differential diagnosis of ACTH dependent Cushing syndrome. So we are comparing ACTH secreting pituitary tumor versus ACTH secreting ectopic tumor. Okay, so ACTH secreting pituitary tumor etiology includes pituitary adenoma and plurihormonal adenoma. Plurihormonal secretes multiple organs, whereas ectopic ACTH secreting tumors are seen in bronchial carcinoma, abdominal carcinoid, small cell lung cancer and thymoma. Just go through the cause again: bronchial carcinoma, bronchial and abdominal carcinoid, small cell lung cancer and thymoma. Then ACTH producing जो pituitary tumor है, it is more common in females and ectopic is more common in males. Clinical features: pituitary tumor आराम से slow onset आएगा, ectopic वाले का rapid onset clinical features रहेगा, and remember इसमें pigmentation and myopathy बहुत ही prominent रहेगा. ठीक है, whereas ACTH secreting pituitary tumor में classical symptoms common रहेंगे. ठीक है, pigmentation, serum. Okay, serum potassium will be less in both, however it is more common in the ectopic ACTH production, right? 24 hours UFC क्या है? Urinary free cortisol. Okay, so it will be of course high in both urinary free cortisol. Basal ACTH level will be very high again in both. Dexamethasone suppression test. So 1 मिलीग्राम ओवरनाइट डेक्सा अगर दोगे तो लो डोज दोगे, दैट इज़ 0.5 mg 6 hourly, तो लो डोज से कुछ नहीं होगा. कॉर्टिसोल विल बी हाई इन बोथ द केसेस. लेकिन हाई डोज कॉर्टिसोल दोगे तो जो पिट्यूटरी सेक्रेटिंग एडिनोमा है तो हाई डोज कॉर्टिसोल से सप्रेस हो जाएगा. हाई डोज कॉर्टिसोल इज़ 2 mg 6 hourly. ओके, सो उससे सप्रेस हो जाएगा. लेकिन एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन जो है वो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस में नहीं आता है, सो उसमें भी तो उसमें नहीं सप्रेस होगा. कॉर्टिसोल विल बी मोर देन 5 micrograms per year. देन यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल मोर देन 80% सप्रेस. यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल भी चेक करना है सप्रेस हो रहा है कि नहीं. सो अगर सप्रेस हो रहा है तो इट इज़ अ माइक्रो एडिनोमा ऑफ द पिट्यूटरी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या फिर मैक्रो एडिनोमा. लेकिन यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन में नहीं सप्रेस होगा. एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन में कोई भी टाइप का कॉर्टिसोल सप्रेस नहीं होगा. ठीक है, वेरेस पिट्यूटरी अगर है तो लो डोज से सप्रेस नहीं होएगा एंड हाई डोज से सप्रेस होएगा. लो डोज मतलब 0.5 mg 6 hourly. ठीक है, या एंड हाई डोज इज 2 mg 6 hourly. Suppression is okay. Then there is inferior petrosal sinus sampling. Inferior petrosal sinus sampling, basal and CRH induced. So inferior petrosal sinus sampling, basal, peripheral. inferior petrosal sinus sampling में pituitary adenoma में तो ज़्यादा मिलेगा, more than 2 and less than 2. IPSS to peripheral ratio, I think this is the ratio, and CRH induced IPSS to peripheral ratio will be high in ACTH producing tumor and low in ectopic. Okay, we will just read this part in the theory section. Fine. So lab investigation, the diagnosis of Cushing disease is based on lab documentation of endogenous hypercortisolism. Measurement of 24-hour urinary free cortisol is a precise and cost-effective screening test. Just highlight 24-hour urinary free cortisol is a screening test. Fine. Alternatively, failure to suppress plasma after 1 milligram overnight dexamethasone suppression test can be used to identify patients with hypercortisolism. As the nadir level of cortisol occur at the night,
elevated midnight serum or salivary sample of cortisol are suggestive of Cushing disease. ये सीरम में भी चेक कर सकते हैं, सलाइवा में भी चेक कर सकते हैं, करेक्ट, और वो भी मिडनाइट पे. Basal plasma ACTH level will distinguish whether it is ACTH independent, that is adrenal or exogenous corticoid, or whether it is ACTH dependent, which is it is pituitary or ectopic ACTH. So plasma ACTH level से पहले तो पता चलेगा कि तुम्हारा exogenous है कि endogenous ACTH की वजह से. Fine. So this is the next. I'm highlighting this. Third is dexamethasone suppression test. Okay. Then mean basal ACTH levels are about 8-fold higher in ectopic ACTH than in so even in these two ACTH producing tumor है, pituitary है या ectopic है, उसमें भी ectopic में बहुत ज़्यादा high रहेगा. However, extensive overlap occurs between these two, preferably dynamic testing based on differential sensitivity to feedback ACTH stimulation in response to CRH, distinguish between blah blah. I'm just striking all this. So इसमें मैंने 3 पॉइंट्स हाईलाइट किया है. फर्स्ट इज 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल विच इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट. सेकंड पॉइंट आई हैव हाईलाइटेड इट, आई हैव जस्ट हाईलाइटेड 1 mg डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, और उसके बाद मिडनाइट सलाइवरी सैम्पल्स लेंगे, सलाइवरी या सीरम. थर्ड पॉइंट आई हैव हाईलाइटेड इज बेसल प्लाज्मा एसीटीएच लेवल्स. बाकी सब टेबल में दिया हुआ है. फिर वेरी रेयरली सर्कुलेटिंग CRH लेवल्स आर एलिवेटेड. हाँ, ये भी हाईलाइट कर दो, सर्कुलेटिंग CRH लेवल हाईलाइट कर रही हूँ. तो इट विल डिटेक्ट द एक्टोपिक ट्यूमर विच इज सेक्रेटिंग CRH and also often ACTH. Okay, most ACTH secreting pituitary tumors are less than 5 mm in diameter, क्योंकि वो जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं. पहले ही उन्होंने बोला क्लिनिकल सिम्टम्स क्लासिकल होते हैं इसीलिए. Higher prevalence of incidental pituitary microadenoma diminishes the ability to distinguish ACTH secreting pituitary tumors accurately from non-secreting incidental. कुछ नहीं काम करने काट लो, ठीक है. ओके, हाँ, यहाँ दिया है उन्होंने डिटेल inferior petrosal venous sampling. Highlighting. Okay, so because pituitary MRI with gadolinium enhancement is insufficiently sensitive to detect small pituitary ACTH secreting adenomas. Okay, so MRI even with gadolinium enhancement is insensitive to detect small pituitary ACTH secreting adenoma. So bilateral inferior petrosal sinus ACTH sampling before and after CRH administration may be required to distinguish these tumors from the ectopic ACTH secreting tumors. ओके, सो क्या करना है इसमें, बायलैटरल इंफीरियर पेट्रोसल साइनस का ACTH लेवल देखना है बिफोर एंड आफ्टर CRH एडमिनिस्ट्रेशन. जस्ट हाईलाइट दिस साइन. ओके, simultaneous assessment of ACTH in each petrosal sinus vein and in diagnosis of peripheral circulation. ओके, तो पेरिफेरल वेन से भी सैम्पल लेना है ACTH का, एंड ईच इंफीरियर पेट्रोसल साइनस से भी लेना है. दोनों को साइमल्टेनियसली लेना है. प्रोवाइड द स्ट्रैटेजी फॉर कंफर्मिंग एंड लोकलाइजिंग द ट्यूमर. सैम्पलिंग परफॉर्म्ड एट बेसलाइन 2 and 5 minutes आफ्टर द इंट्रावेनस ब्रोवाइन CRH इंजेक्शन. ओके, बेसलाइन 2, 5 and 10 minutes. अभी तक के जितने आपने देखे थे पिट्यूटरी के, तो टाइमिंग उनके 30 minutes थे. 0, 30, 60, 120. इसमें बहुत ही फास्ट है. ओके, बेसलाइन 2, 5, 10 and 10 minutes. ठीक है. इंक्रीज रेशियो दैट इज मोर देन 2 ऑफ इंफीरियर पेट्रोसल टू पेरिफेरल वेन ACTH कन्फर्म्स पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम. ओके, सो रेशियो निकालना है इंफीरियर पेट्रोसल वाला वर्सेस पेरिफेरल. ऑफ कोर्स ना, इंफीरियर पेट्रोसल इज क्लोज टू योर पिट्यूटरी ग्लैंड. सो अगर इंफीरियर पेट्रोसल वाले में ज़्यादा है ACTH एज कम्पेयर टू पेरिफेरल वेन, तो इट इज़ पिट्यूटरी सेक्रेटिंग. अगर पेरिफेरल वेन में ज़्यादा है तो फिर इट इज़ एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग. पेरिफेरल वेन में ज़्यादा रहेगा तो रेशियो कम रहेगा. सो एन इंक्रीज रेशियो दैट इज़ मोर देन 2 ऑफ इंफीरियर पेट्रोसल वर्सेस peripheral vein ACTH confirms the pituitary Cushing syndrome. After CRH injection, the peak petrosal to peripheral ACTH ratio more than 3 will confirm. So peak more than 3 रहेगा तो confirm ही हो गया. ठीक है. The pituitary ACTH secreting tumor. Sensitivity of this test is more than 95%, which is very good, with very rare false positivity. False negative result may be encountered in patient with aberrant venous drainage. ठीक है. पेट्रोसल साइनस कैथेटराइजेशंस आर डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस ये सब है. 0.05% of patient develop neurovascular complication. Okay, highlight that. The procedure should not be performed in patients with hypertension, with known cerebrovascular disease, and in patient with well visualized pituitary adenoma and MRI. वही तो दिख रहा है तो फिर टाइम पास मत करो. So let me come back to the table.
IPSS टू पेरिफेरल ACTH, राइट. तो अगर वो ज़्यादा है, मोर देन 2 है, बेजल ही मोर देन 2 रहेगा एक तो सबसे पहले, और CRH इंड्यूस तो मोर देन 3 हो जाएगा, ठीक है. वेराज एक्टोपिक ACTH में दोनों रेशो कम है, लेस देन 2 लेस देन 3, ठीक है. सो आई एम रिवाइजिंग inferior petrosal venous sampling. So just highlight these points that I am reading out now. First, bilateral inferior venosal sinus ACTH sampling. We have to check the level of ACTH of bilateral inferior venosal sinus vein before as well as after administration, मतलब कि baseline और एक after CRH administration, ठीक है. और उसके साथ simultaneously we have to take a sample from peripheral circulation as well. Okay, so the sampling is performed baseline 2, 5 and 10 minutes after IV CRH 1 microgram per kg, याद रहा तो ठीक है. इंजेक्शन, सो इंक्रीज रेशियो baseline will be more than 2 is a tells us a pituitary Cushing syndrome, and after CRH injection तो more than 3 तो confirm कर देगा. Sensitivity is 95% and very rare false positive result. तो ये advantages के दो ही पॉइंट है, sensitivity more than 95% and very rare false positive. Disadvantages false negative कब रहेगा, जब भी aberrant venous drainage रहेगा, तो कहीं और ड्रेन कर रहा है तो उसके पास नहीं रहेगा. फिर सेकेंड डिसएडवांटेज, पेट्रोसल साइनस कैथेटराइजेशन आर टेक्निकली डिफिकल्ट, दे कैन हैव अ न्यूरोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन. ये किस में नहीं करोगे, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में नहीं करोगे, एनी सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज ऑलरेडी है तो नहीं करोगे, और विजुअलाइज पिट्यूटरी एडिनोमा और MRI है तो भी नहीं करना.